Hello, everybody. Greetings from Indian Thyroid Society. I am Dr. Mohan T. Shenoy. I am a senior consultant endocrinologist working in Sri Gokulam Medical College, Trivandrum. It is my pleasure to welcome you, all of you, as part of the patient awareness advocacy group meetings we have been having for the last several months. So it's my pleasure to welcome Dr. Shashank R. Joshi, sir, who is the president of the Indian Thyroid Society. He's a visionary leader. He's a senior consultant endocrinologist working in Mumbai, Leelavati Hospital, and his own clinic, Joshi Clinic in Mumbai. So, how are you, sir? How is the day today, sir? Excellent, Mohan. Thank you so much. Thank you, sir. So, Thank you, sir, for joining. Sir, yeah, we want to hear from you, sir. What is your vision and what is the happenings here, sir? correct. So first of all, I would like to thank everybody from the Indian Thyroid Society, particularly our erstwhile secretary, Dr. Arun Menon, who is also our special guest today, our treasurer, Dr. Mini Pillai, Dr. Carla, who is our scientific coordinator, our super active special word of mention to Dr. Mohan Chinoy. We have one of our bright members and endocrinologist, Dr. Joe George, also very actively involved in the entire executive of Indian Thyroid Society and all the members. This is a educational program which was started by my past president, Dr. Sarita Bajaj, and I'm grateful to USV and the team headed by Sachin, Shafiq, and everybody for making this happen. This is purely having no conflict of interest. We just want to educate people at large on various aspects of thyroid diseases. Today's topic is goiter. We have a very well-known endocrine surgeon and Dr. Arun Menon, who are going to discuss the medical and surgical parts of goiter, very ably moderated by our very erstwhile moderator. And I once again congratulate Mohan for Thank you, sir. taking a lead in this entire initiative. Remember, we are celebrating 75 years of Indian independence. And this year, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has the Atmanirbhar mission. And therefore, it's very important for us to be self reliant and self independent. It's very important to recognize that people who treat thyroid diseases are super specialists in endocrinology who have DM degree, and surgeons who operate thyroid are MCH in endocrine surgery. There are of course DNBs also, like which is equivalent of DM or MCH, and these are going to be the domain experts for the day. I once again hand over the session to Dr. Mohan Chanoy and congratulate everybody in the team for making these lively webinars happening. We are going to get global guests also in the future, which are people who are endocrinologists of global origin, of Indian origin, who are global experts. But today we have very much our own, very proud Indian experts as we celebrate our, to 75 years of independence. And I wish everybody in advance a very happy Independence Day. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you for joining. So, moving on with the program. Today's topic is regarding goiter and what we should know, how it is happening, and very important, frequently asked questions which people, public, general public, also our relatives may be asking us. So they may not be aware of everything which is happening around, but they will be misguided by some information over the internet or some other sources of non-authentic information. So to moderate the session today, let me welcome first Dr. Joe George, sir. He's a senior consultant endocrinologist and director of Endodive Clinic, Kozhikode. How are you, sir? Everything is Hi, good, sir. hi Mohan. How Sir. are you? So, yes, sir. Thank you, sir. So, we have also joined by Dr. Arun S. Menon, sir, who is a senior consultant endocrinologist, also formerly professor at the Amrita Institute of Medical Science. Now he is working at Lisi Hospital, Kochi. So he's also having a lot of information knowledge about the topic generally and also thyroid. So also welcome. Hello, sir. Thank you, Mohan. Thanks for the invite. Thank you. Also joining us from Mumbai is Dr. Ritesh Agarwal. He is a senior consultant endocrinologist, endocrine surgeon who is attached to Leelavati Hospital, Mumbai. And he's also having a lot of accolades regarding endocrine surgery. He has got a lot of high volume surgeon and been in with busy practice. I think it's very nice of him. Also, other panelists and also Jojo sir for dedicating and devoting time for us. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you, Mohan. Thank you, Mohan. Uh, uh, First of all, let me thank Indian Thyroid Society, led by none other than the biggest endocrinologist of our time, Dr. Shashank Joshi, sir, and also Mohan Chennai, who has been organizing this Facebook Live program so beautifully since the last few months. So today, I'm proud to be part of this program. It's another common topic that is to be discussed today, and we'll be dealing it in a mixture of Hindi and English.
so that it reaches maximum public around India. This is the primary objective of this program, is to increase the awareness among people to about the thyroid disease and remove the misconceptions, because only when the misconceptions are removed, then only the correct thing can come out. So for this, we have the best experts from India, that is already been introduced, Dr. Ritesh and Dr. Arunas Menon. One is endocrine surgeon, Dr. Arun is an endocrinologist. So we'll not waste much of the time, because there are a lot of questions that can be asked. Let me tell you that you can ask the questions in your Facebook page, and actually which will come to me and I'll be discussing it, because the success of the program depends on answering your questions rather than just our framed questions. So please try to interact more and to frame your questions, frame your doubts, so that we can involve your questions, and that way improve the quality of the program. So I am not wasting too much time here. एक goiter क्या है? ये goiter एक जैसा चीज है जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। देखो मेरे बीवी को goiter है, कोई बोलता है, कोई और बोलता है गोली खाता है लेकिन goiter है। तो my first question to Ritesh Agarwal would be, what is actually a goiter? See, because some people say that goiter is swelling, some others say that it's a hormone imbalance. वो goiter क्या होता है? What is it? How is it different from thyroid disease? Thyroid का बीमारी और goiter में क्या relation है और क्या difference है? थैंक यू जोसर, थैंक्स अ लॉट। एंड इस मोमेंट पे सबसे पहले मैं इंडियन थायराइड सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, स्पेशली अपने सारे एंडोक्राइन सर्जन्स की तरफ से, जिन्होंने और एंडोक्राइन सर्जन्स को इस स्टेज पे आने का मौका दिया और हमें अपनी बातें शेयर करने का भी मौका दे रहे हैं। जो सर आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है। गॉइटर एक्चुअली पब्लिक में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, पेशेंट के पास पहले से किसी ने बता रखा होता है कि उनको गॉइटर है या उनके गले में स्वेलिंग है, वो सोचते हैं कि ये बहुत ही कोई खतरनाक बीमारी, क्योंकि गॉइटर नाम सुन के लगता है कि कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी जैसी हो गई है, कुछ होने वाला है तुरंत, इसलिए वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि गॉइटर वर्ड से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गॉइटर का सिर्फ इतना मतलब होता है कि थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ गया है। थायराइड ग्लैंड एक बड़ा स्पेशल ग्लैंड होता है, छोटा सा ग्लैंड होता है, हमारे गले में इस जगह पे लोकेटेड होता है, यहाँ पे सांस की नली के आधा इस साइड आधा इस साइड। थायराइड ग्लैंड ना नॉर्मली दिखता है ना ही फील होता है, पर सांस की नली सबको सामने से दिखती है। तो थायराइड ग्लैंड का जो काम होता है वो केमिकल बनाता है, T3 और T4 जो हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, जो एंडोक्रिनोलॉजी ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। जब भी कभी किसी वजह से थायराइड का साइज बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है, तो उसको बोलते हैं गॉइटर। गॉइटर एक साइड का भी हो सकता है, दोनों साइड का भी हो सकता है। गॉइटर अगर फुल थायराइड का साइज बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल गॉइटर, जो अलग अलग बीमारी की वजह से होता है थायराइड से, उसमें हार्मोन इम्बैलेंस ज़्यादा होता है। मगर कभी कभी थायराइड में गांठ पड़ जाती है, जिसको बोलते हैं नोड्यूलर गॉइटर या नोड्यूल्स। नोड्यूल्स अगर एक साइड में हो तो उसको बोलते हैं सिंगल या सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल। अगर दोनों साइड में होते हैं, ढेर सारे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। सो आई होप कि जो सर अभी तक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि गॉइटर क्या होता है। बहुत बड़ा साइज हो जाता है और आम पब्लिक में गॉइटर को घेंगा बोलते हैं हिंदी में, जो एक्चुअली जो पहाड़ी एरियाज है, जो नॉर्दर्न इंडिया है, वहाँ पे घेंगा वर्ड काफी कॉमन है। तो गॉइटर का सिर्फ इतना मतलब होता है घेंगा हो गया है। हाँ, वजह क्या है वो हमें सब टेस्ट करके पता करना पड़ता है। Okay. So yeah, so that was I don't need to do anything now, because it's so clearly explained that goiter is just a swelling of thyroid gland. It's not about the tablets or anything. It's just a swelling. It can be due to so many other reasons. So that's the next question to Dr. Arunas Menon. See, Dr. Goiter, we know now what is goiter, but what are the common reasons for goiter? ये goiter क्या वजह से हो सकता है? Yeah, Joe, thank you, Joe, for that question. Thanks for this session. Yeah, there are many causes for goiter or this swelling of the thyroid gland, as Ritesh has mentioned. The commonest cause that we face in India and all over the world is due to iodine deficiency. It is still that is the reason. Although if you take cities and some parts of India, the iodine deficiency has been corrected. You know why? Because that is largely because of the iodinization of the salt and a focus on that. However, iodine deficiency is still endemic in many parts of India and all over the world.
So that itself is the biggest reason, because when you have an iodine deficiency, the gland has to enlarge. Thyroid gland has to enlarge to actually take up those iodine and make more thyroid hormone. So I think that is a commonest reason. Now, Ritesh already mentioned some other reasons, but I should also introduce one of the other reason, which is a physiological goiter, which causes a lot of anxiety in young females, in fact, in children, I should say, during the time of their puberty and beyond, when they have physiological goiter, slightly enlarged neck swelling, which causes a lot of anxiety among the patient as well as the family, as in fact parents more than that. So that is physiological goiter. I'm sure we'll discuss that later. But then the other two causes, two main causes, there are obviously other causes. I'm sure we will, in this whole of this discussion, we will go through that. But there are the nodular goiters, which means you develop a nodule, it will be asymmetrical, and that can cause a swelling of. So nodular goiters and multinodular goiters, again, multiple nodules. So the commonest cause is still iodine deficiency, and I think we should all be aware of it. And we should, when we meet a doctor, we should discuss these aspects and find out what exactly is the type of my goiter. Over to you, Joe. Dr. Arun, I will just ask you one more side question there. आपने बताया कि अभी भी हमारे देश में ज्यादातर गॉइटर जो है यानी कि जो सूजन होता है थायराइड में, वो आयोडीन का डेफिशिएंसी के वजह से होता है, और उसके अलावा ऑटोइम्यून यानी कि वो हमारा शरीर का जो एंटीबॉडीज जो है, जो हमारा थायराइड बीमारी से हमें बचाता है, वही एंटीबॉडीज हमारा थायराइड के खिलाफ हो जाता है, और उसके वजह से भी थायराइड का बीमारी हो सकता है। लेकिन आपने जो बताया कि आयोडीन के वजह से ऐसा होता है, तो वो नहीं होना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? So I think that's a very valid question, Joe. Because so you said, so I talked about iodine deficiency. I didn't specifically mention actually about the autoimmune thyroiditis. In fact, if you take other parts of the world, say for some of the developed countries like US, so autoimmune thyroiditis, and that causes the swelling itself. So autoimmune thyroid disease is very, very common, and that itself can cause a goiter. Okay, so that has to be mentioned along with iodine deficiency. Now, what can be done about it? I think the most important thing, that one of the main reasons why there is iodine deficiency is because of the lack of iodine in the soil in our part of the world, and lack of that iodine in the and the diet. So the dietary iodine deficiency is what causes it. The best way to correct it is by iodinization, and that is what has been happening. The universal iodine program has been happening, especially in the salt, by iodizing the salt. So that has been there's been a big program, has been going on for a couple of decades at least now, and that has certainly made a big difference in many areas. However, along with that, this autoimmune thyroid disease has become more common, and because of which now there is that, it is sometimes, it's still common. The goiter is still common, but the cause has slightly shifted from being iodine deficiency to becoming an autoimmune disease. And there is a lot of discussion about these things. I'll not go into the nitty-gritties of all that, but to say that the goiter still remains a common problem, perhaps the cause has changed from iodine deficiency being the cause of goiter to a autoimmune disease being a cause of goiter now. Does that answer your question, Joe? Yeah. Dr. Ritesh, you just told us that जो गोइटर जो होता है वो बहुत किस्म का हो सकता है, यानी कि पूरा गले का, वो जो थायराइड का गले का सूजन हो सकता है, वो एक नोड्यूल हो सकता है, ज्यादातर 4-5 नोड्यूल्स एक साथ में हो सकता है। तो ये सब में देखो, जब एक पेशेंट हमारे पास आता है तो उनको ज्यादातर डर यही रहता है कि ये जो सूजन जो है वो कैंसर तो नहीं है। तो गॉइटर में कैंसर होने का चांसेस क्या है, वो एक इसमें अलग रहता है क्या, या उसमें चांसेस क्या, ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये देखने के लिए? तो थोड़ा सा मैं आपको नोड्यूलर गॉइटर के बारे में शुरुआत से बता देता हूँ, ताकि पब्लिक को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, नोड्यूल कोई भी होगा वो छोटे से शुरू होगा, बहुत छोटा नोड्यूल्स होते हैं, वो धीमे धीमे स्टार्ट होते हैं। थायराइड में एक अच्छी बात ये होती है कि थायराइड के जो ग्लैंड्स के ट्यूमर्स या नोड्यूल्स होते हैं, इवन कैंसर भी, वो बहुत ही स्लो ग्रोइंग होते हैं, बहुत धीमे धीमे ग्रो करते हैं, तो उससे कोई डरने की बात नहीं होती। ये सबसे अच्छी बात थायराइड ग्लैंड में है। तो थायराइड ग्लैंड में जो नोड्यूल्स है वो धीमे धीमे ग्रो करते हैं।
जब भी वो छोटे होते हैं 5 mm 6 mm या 1 सेंटीमीटर से छोटे, तो कई बार वो फील नहीं होते हैं, वो बड़े नहीं होते हैं, तो उस समय तक वो ग्वाइटर नहीं बनते हैं। नोड्यूल जब बड़े होने लगते हैं, जब फील होने लगते हैं, तो वो ग्वाइटर का फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है। तो नोड्यूल जब एक साइड होता है उसको सॉलिटरी नोड्यूल बोलते हैं, दोनों साइड होता है तो मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर बोलते हैं। तो उसकी पहले हमको टेस्टिंग करके ये चेक करना पड़ता है कि नोड्यूल्स किस प्रकार के हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जो, कि पब्लिक में या किसी भी पेशेंट में ये सबसे बड़ा डर होता है कि देखो हमारे गले में गांठ पड़ गई है, गांठ में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कैंसर डेवलप हो रहा हो। ये सबसे बड़ा लोगों के मन में भय रहता है, सबसे बड़ा डर रहता है कि कहीं कैंसर ना हो गया हो। वो कैंसर वर्ड से घबराते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बताता हूँ डॉक्टर जो, डॉक्टर अरुण या बाकी सब पब्लिक को। जी, मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान की डेली पूजा करता हूँ। मैं भगवान से डेली ये प्रे करता हूँ कि कभी मुझे कोई बीमारी ना दे, क्योंकि मैंने हजार किस्म की बीमारियां देखी है। मैं और कोई भी व्यक्ति होगा वो कभी बीमारी नहीं चाहेगा, और कभी अगर बीमारी देनी भी हो तो कैंसर जैसी बीमारी ना दे, और बाई चांस अगर कैंसर देना भी हो तो थायराइड का कैंसर दे, क्योंकि वो 100% क्योरेबल होता है। तो इसीलिए किसी को भी डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी प्रॉपर्ली टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करके ये पता करेंगे कि नोड्यूल्स में किस चीज़ से डेवलप हुआ है, नॉन कैंसर है या कैंसर है। मैक्सिमम नोड्यूल्स, सबको ये समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम नोड्यूल्स नॉन कैंसर होते हैं, कैंसर नहीं होता है उनमें। तो कैंसर होने के चांसेस नोड्यूलर ग्वाइटर में, चाहे वो सिंगल नोड्यूल हो या मल्टीपल नोड्यूल्स हो, 5 से 20% तक का होता है। 80 से 95% तक के नोड्यूल्स नॉन कैंसर होते हैं। इसलिए बिल्कुल भी मत घबराइए कि अरे नोड्यूल डेवलप हो गया तो कैंसर ही होगा, ऐसा नहीं है। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर के पास टाइमली जाएं, प्रॉपर टेस्टिंग कराएं, और उसके बाद डिसीजन लेके आगे क्या करना है। Dr. Ritesh has already mentioned that, see, the chances of malignancy or cancer in a nodule is very less, less than 5%, and most of the nodules are benign. But is there any difference in risk between multiple nodules, single nodule, no nodule? So, is there any difference? पहले ये सोचा जाता था कि सिंगल नोड्यूल अगर है तो उसमें चांसेस कैंसर के ज़्यादा हैं, बट एज द टाइम हैज़ प्रोग्रेस, जैसे जैसे समय निकला, हमारे काफ़ी रिसर्चेस हुई, तो मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर में भी ये पाया गया कि कैंसर्स होते हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि सारे नोड्यूल्स उसमें कैंसरस हो, पर कुछ नोड्यूल्स में कैंसर हो सकता है, या सिंगल नोड्यूल में उसमें भी कैंसर हो सकता है। तो चाहे वो सिंगल नोड्यूल वाला ग्वाइटर हो, चाहे मल्टीपल नोड्यूल्स वाला ग्वाइटर हो, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको टाइमली चेक करके आगे का फर्दर ट्रीटमेंट करना है। Okay. So, Dr. Arun, I'll just go to the next question. We are actually started getting some questions from the audience also. That's a very nice sign. So, ये जो गांठ जो रहता है थायराइड का, यानी कि जो जो स्वेलिंग जो रहता है, उसका और कोई सिम्टम्स होता है क्या, या यानी कि हमें पता चल सकता है, या पेशेंट्स को ये पता चल सकता है कि ये मुझे गोइटर हो रहा है, और जो स्वेलिंग के साथ में और कौन कौन सा सिम्टम्स रहता है? What are the symptoms that can be associated with goiter? So I think that's a very important question, Joe, because this is something which in clinic patients get confused with and ask us a lot of questions on. So I think it's very, very important for people to understand what symptoms a goiter can cause or will cause. Now, I think the first message is most of the goiters may be asymptomatic. There may not be any symptoms whatsoever because many of them are mild and many of them may not cause any difficulty at all. Now, patients sometimes get very confused and they ask, oh, I have got hair loss. I'm putting on weight. Is that due to my goiter? Now, a swelling of thyroid by itself will not cause that. Okay. But of course, it can indirectly cause it, which is one of the reasons why you should meet a doctor, a specialist, because indirectly a swelling can be associated with lack of hormones. The hormone deficiency could happen, and that can cause a lot of symptoms. But these symptoms in the rest of the body, symptoms that occur like the typical thyroid symptoms that everybody talks about, hair loss, weight gain, sleepiness, dry skin, all these are due to lack of hormones, or symptoms like you are losing weight, you're anxious, all those things which are due to excess of hormone. That again is due to excess of hormone. So in a goiter, you can have all these different types, but goiter by itself will not cause these symptoms. If it causes a hormone imbalance, it can cause it. Okay, so I'm not saying that it will not cause it, but it will not cause it by itself. This is important to understand. So what does it cause? The real symptoms that a goiter causes are
what we call as local symptoms or pressure symptoms, if at all they cause it, which is, again, as I said, not very common, but it can cause sometimes. What are the things? It will be one, swallowing difficulty. It can be just, some difficulty when you're turning the neck, and that sort of. And when you're lying down, you can feel some discomfort. These are the common. To develop breathing problems and all that is, again, we do see it once in a while, but it's not very common at all, because a lot of people come to us saying, I've got breathing problem. People say it is asthma or allergy, or no, I think it is my thyroid. And you see that there is only a mild goiter. And when you tell them, many of them are not convinced, because people would have told them that, oh, your goiter is causing all your symptoms. So to cause breathing problems or those sort of symptoms is not very common unless you have a large goiter, or a goiter that is growing inside, growing towards the trachea, or to the breathing apparatus. So it is important for you to understand that most of the goiters may not cause symptoms. Some of them cause symptoms due to hormone imbalance. Some of them cause symptoms due to the pressure effects, which will be either all these symptoms that I've talked about, pressing on some of the organs around the thyroid gland. ओके, Okay. डॉक्टर अरुण मेनन सर ने अभी बताया कि ये जो सूजन है, जो गोइटर है, वो उसके ये गोइटर एज सच ज्यादातर कोई सिम्टम्स नहीं बनाते, लेकिन उसके साथ में अगर हार्मोन्स का कोई चेंजेस हो, यानी कि जैसे हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड, जैसे हार्मोन्स कम हो या ज्यादा हो, तो उसके वजह से सिम्टम्स हो सकते हैं। ये जो गांठ के वजह से सिम्टम होना है, तो वो गांठ काफी बड़ा होना चाहिए, नहीं तो वो अंदर के तरफ निकलना चाहिए। तो ऐसा है तो वो धूकी गिरने में तकलीफ हो सकता है, या तो ये खाना खाने के टाइम पे थोड़ा ऐसा कोई रुकावट जैसा लग सकता है, लेकिन वो सब बहुत रेयर है, यूजुअली नहीं होता है, ज्यादातर असिम्प्टोमेटिक रहता है और सूजन जैसा ही रहता है, और दैट्स इट। सो एंड एक्चुअली yeah, so we'll move to the next question, Dr. Ritesh. What are the possible tests that I need to do if I have a doctor, or if I need to meet a doctor? What are the possible tests that he may suggest if I have a goiter? बहुत ही बड़े क्वेश्चन पूछा आपने जो सर, एंड यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रहती है, पब्लिक को भी जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बहुत सिंपल टेस्ट ही चाहिए होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट, ज़्यादा स्पेशल टेस्ट की ज़रूरत इनिशियली नहीं पड़ती है। सोनोग्राफी एक ऐसी चीज़ है, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी, जो यूजुअली हर जगह अवेलेबल रहता है। तो सबसे पहला टेस्ट जो होता है, हम ब्लड के टेस्ट करते हैं, जो सिंपल टेस्ट हैं T3, T4, TSH के, और सोनोग्राफी जो गले की करते हैं, उसमें हम थायराइड ग्लैंड का सब कुछ देखते हैं, जैसे साइज हो गया, नोड्यूल का साइज हो गया, नोड्यूल का फीचर हो गया कि नोड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं जो थोड़ी सस्पिशियस होती हैं, तो इस तरीके से हम लोग ग्रेडिंग भी करते हैं। T3, T4, TSH है, उसमें हम लोग ये देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस है कि नहीं है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हम लोग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं ताकि वो उसको करेक्ट कर सकें। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है और सोनोग्राफी में सस्पिशियस फीचर्स कुछ दिखते हैं, तो फिर हम उसके आगे फर्दर टेस्टिंग करते हैं। सोनोग्राफी की आजकल हम लोगों ने एक वर्ल्ड वाइड जो है ग्रेडिंग डेवलप हो गई है, जिसको बोलते हैं TIRADS, थायराइड ग्रेडिंग। थायराइड ग्रेडिंग हमें काफ़ी हेल्प करती है ये जानने में कि नोड्यूल में कैंसर के फीचर्स कम है, कैंसर के फीचर्स ज़्यादा हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों को वो ग्रेडिंग बताते हैं, उसी तरीके से हम लोग आगे का ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। ये ग्रेडिंग 1 to 6 होती है। जैसे जैसे 1 से 6 की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे चांसेस ऑफ कैंसर ज़्यादा होने लगते हैं। तो एक तो सोनोग्राफी हो गई, जिसमें हम लोग थायराइड ग्रेडिंग करते हैं, आजकल वो मैंडेटरी है। सेकंड थिंग, अगर हमको लगता है कि इसमें सुई डाल के इसकी सेल्स को चेक करना चाहिए, ये देखने के लिए कि वो कैंसर की सेल्स हैं, सादी सेल्स हैं, तो उसके लिए हमको एक टेस्ट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं FNAC। FNAC का फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एक्सपायरेशन साइटोलॉजी, यानी कि एक पतली सी सुई डालते हैं। पब्लिक को बिल्कुल डरना नहीं है, पेशेंट को घबराना नहीं है, इसमें एक पतली सी सुई होती है। बेटर ये रहता है कि सोनोग्राफी वाले ही इस सुई को डालें, क्योंकि वो सोनोग्राफी का मशीन का प्रोब वहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे सुई जानी है जिस जगह पे, उस जगह को लोकेट करते हैं और फिर सुई डालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नोड्यूल्स में 2 पार्ट होते हैं, एक सॉलिड पार्ट होता है और एक सिस्टिक यानी कि पानी वाला पार्ट होता है। तो हमें सॉलिड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हम डायरेक्टली अगर नीडल डालें तो हमें नहीं पता लगता है कि कहाँ पे नीडल जा रही है, पानी वाले पार्ट में जा रही है कि सॉलिड पार्ट में जा रही है। तो इस वजह से सोनोग्राफी ज़रूरी होती है। सोनोग्राफी मशीन के सहारे हम लोग नीडल डालते हैं, उसमें से कुछ सेल्स, कुछ फ्लूइड निकालते हैं, उसकी स्लाइड बनाते हैं और फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं लैब में पैथोलॉजिस्ट के पास, जो उसको माइक्रोस्कोप में टेस्टिंग करते हैं, उसकी रिपोर्ट देते हैं।
उसकी भी ग्रेडिंग होती है जिसको बोलते हैं बेथेस्डा ग्रेडिंग, वो भी 1 to 6 होती है और हमें ये बताती है कि चांसेस ऑफ कैंसर किस में कितने हैं। तो 1 में कैंसर के चांसेस ऑलमोस्ट नील होते हैं और टुवर्ड्स 6 मतलब कैंसर कंफर्म होता है। उसके हिसाब से ही हमारा आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि हमको आगे फर्दर क्या-क्या टेस्टिंग या क्या ट्रीटमेंट करना है। Okay, Dr. Ritesh. That means when you may have a swelling, the first thing that your doctor is going to do is ultrasound to see Yes. whether it's a just diffuse swelling or whether there are nodules in it. Even when there are nodules in it, you don't have to worry because there is a grading system in ultrasound which is called the Thyroid grading, which may be from 1 to 6, which actually tells the doctor how much is the risk of developing a cancer is. So if the risk is high, then the chance of cancer is high. So depending on that, he will suggest a FNAC, which is a 5 needle aspiration. That's a very small needle which is put into the nodule, which ideally should be done under ultrasound guidance because the nodules can be of various types, which sometimes you have to exactly point out the suspicious area and take it. So it's always better to do a FNAC under the guidance. And once you do an FNAC, only in case then you may get the specimen for the pathologist, and pathologist again grades it, which is called a Bethesda grading, which will again tell the doctor whether what is the risk of developing cancer, and also the doctor would be the specialist doctor would be able to make the correct decision for you what to do further. So, Dr. Ritesh, does that mean that you need to do FNAC in every nodules, or only some nodules are selected, or do you need to do FNAC in every goiter? Thank How do you, you John. select So, nodules? sir, this is also very important point. जो सिंगल नोड्यूल होता है, हमको उसमें जज करना पड़ता है कि पेशेंट का आगे का ट्रीटमेंट क्या करना है। पेशेंट तो हमारे सामने बैठा है, वो तो हमसे पूछता है कि हमको ट्रीटमेंट चाहिए। तो ट्रीटमेंट अगर हमको फाइनलाइज करना है, हमको सोनोग्राफी के बाद एफएनएसी करना प्रेफरेबल रहता है, ताकि हमको एक गाइडेंस मिल जाए कि थायराइड की जो स्वेलिंग है सिंगल नोड्यूल वाली, वो किस चीज़ की है। काफ़ी हेल्प मिलती है एफएनएसी से। जब मल्टीपल नोड्यूल्स होते हैं तो क्वेश्चन राइज करता है कि वहाँ पे एफएनएसी कहाँ से करें, क्योंकि नोड्यूल्स तो ढेर सारे हैं, आप हर जगह तो नीडल डाल नहीं सकते हैं। तो हम लोग रेडियोलॉजिस्ट को ये बोलते हैं कि एफएनएसी जितनी भी सस्पिशियस नोड्यूल्स है, कहीं पे भी आपको कोई भी सस्पिशियस फीचर दिख रहा है, उस जगह से आप नीडल डाल के एफएनएसी ले लीजिए, ताकि हम कुछ मिस ना कर रहे हों। तो एफएनएसी करते हैं प्रेफरेबली नोडुलर गोइटर में। जब डिफ्यूज गोइटर यानी कि जब पूरा थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है एक जैसे ही बिल्कुल, तो उसमें एफएनएसी का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि सारा का सारा थायराइड एक जैसा है। बट नोडुलर गोइटर में यस, एफएनएसी का रोल है। और जो सस्पिशियस एरियाज है, जहाँ पे भी हमको डाउट हो रहा है कि इस पार्ट में, इस जगह पे कुछ कैंसर की सेल्स हो सकती हैं, वहाँ से एफएनएसी लेते हैं, वो बेटर रहता है। प्लस आपको एक चीज़ और बताऊँ, कभी-कभी थायराइड ग्लैंड में कैंसर के साथ में जब कैंसर होते हैं तो उसमें कुछ और भी चीज़ें इनलार्ज होती हैं, जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स हमारे गले में साइड में होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। जैसे अमूमन गले में देखा जाए तो गले में ही 200 के आसपास लिम्फ नोड होते हैं, पूरे शरीर में 600 लिम्फ नोड होते हैं। ये लिम्फ नोड कैंसर को रोकने का काम करते हैं, कैंसर के स्टेशन का काम करते हैं, फिल्टरिंग स्टेशन का। तो जब कैंसर की सेल इनमें आने लगती है, इनका साइज भी बढ़ जाता है। तो अगर इनका साइज बढ़ जाए, फील भी होने लगे या साइज बड़ा हो जाए, तो वो भी सोनोग्राफी के सारे लिम्फ नोड्स में से भी एफएनएसी करनी चाहिए। उससे हमको एक बेटर हेल्प मिलती है देखने में कि थायराइड ग्लैंड का कैंसर है या नहीं है, और अगर है तो क्या लिम्फ नोड में स्प्रेड हुआ है या नहीं है। Okay, so that means you don't have to do FNAC in all swellings. So the diffuse swellings where there is no nodules as such, you may not need FNAC, and that's the main reason why Dr. Ritesh has suggested that you need to go for an ultrasound guided FNAC, especially when there are multiple swellings. If you do a blind pricking on the swelling, you may not reach the exact place where you intend to reach. So it's always better to go for ultrasound guided swelling, and that too not from every nodules, only from the suspicious nodules. And there could be lymph nodes also, which actually is the first area where the thyroid cancer can spread. So the ultrasound, while they're doing, they will also look into the lymph nodes, and from there also you can get an FNAC, which will again give a better idea whether the cancer, if any, is there that has spread to the lymph node. But these are all very rare, and you don't have to worry about it. It's a very mild disease, as Dr. Ritesh has said for himself. If God has decided and asked you, my dear friend, you are going to get a cancer, then probably thyroid cancer is the best thing that you can ask from your God, because that's one of the simplest cancer. Because see, it is so easy to treat, because you just manifest it as swelling outside, so it is usually diagnosed so early that it is almost always completely curable. Okay, so Dr. Arun, आपके लिए हमारा एक प्रेक्षक ने क्वेश्चन डाला है
ये हमारा सुरेंद्र गुप्ता साहब ने एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, व्हाई autoimmune disorders are on the rise these days? Any preventive modalities to prevent autoimmune disease? That's not a very easy question, isn't it? Obviously, yes, definitely the autoimmune disease is on the rise. Now, what is the reason? I don't think anybody knows that answer for sure. We know that all autoimmune diseases are on the rise. Again, what is the reason? Is it because we are diagnosing more? Is it because we have more diagnostic modalities? It might be. I'm talking about other autoimmune diseases. In the case of thyroid, there has definitely been an increase. Most of it is associated with this is triggered by other factors. What are the triggering factors? Now, there is definite evidence that many infections can trigger it, especially viral infections. And one of the things that we have all seen in this last few years has been the COVID causing an increase in the thyroiditis that it caused. So, the autoimmune thyroid disease can be caused by many viral infections, which are self-limiting by itself. They will come and go. So, you might just get a fever or a sore throat or something, and it goes away, and then you get a full-fledged either symptomatic thyroid autoimmune thyroid disease, or sometimes asymptomatic thyroid disease at that time, but then later you have a thyroid hormone deficiency happening. So many times you can either get a thyroid hormone excess followed by a deficiency, or you might just get a thyroid hormone deficiency can happen. But the reasons, so what is the second reason? So one, I said infections can be a reason. There is, I would say, postulation. I will not go into all the details of this, that it might also be caused by some of the chemicals and the pollutants. And I think there is also some growing evidence around this, that many of what we call as endocrine disruptors these days. So there are many disruptions to our system that is happening within and it is largely driven by the very many chemicals in our environment, and that again might be a triggering factor. Again, I'm using my choosing my words very carefully here. Might be. The evidence is not huge here, it's not great here, and this is exactly the problem, which is why I can't answer the second part of your question, which is how can we prevent it? Because unfortunately, unlike many things we talk about, say metabolic diseases, obesity, hypertension, all these things we talk about, so many lifestyle changes we can make. Unfortunately, as things stand now, there is no single or effective methods by which we can prevent autoimmune thyroid disease. And this is many a times is very frustrating for patients, because everybody then puts it onto diet. And I think that also I need to mention. If Joe would allow me to, then I can talk about the diet as well in this point, because the almost always the first thing the patient asks you is, what should I avoid? And you'd say, why do you need to avoid? They say, no, everybody has got a favorite diet that should be avoided. That should be avoided. So everybody would say, oh, please avoid, don't take tapioca, don't take cabbage, don't take this, don't take that, don't take milk, don't take wheat. Now, as things stand, there is no evidence to say that any of the food per se triggers autoimmune thyroid disease. Again, it is autoimmune thyroid disease I'm talking about. So there is no need to, or there is no point in avoidance diet. Over strict diet will cause other problems. Most often, that's what you see. So the thyroid disease is certainly not going to get better or going to be prevented by changing your diet, from what we know at this point. And that's the truth. But if you go into the social media, if you actually Google this, you will see thousands and thousands of diet. The fact that there are thousands and thousands of things itself shows that nobody knows the answer, which is why everybody is postulating. So postulation is always very easy, isn't it? We can postulate whatever you want. But there is no evidence to say that one is the reason and the other is not the reason. And this is where the problem is. So, unfortunately, I can't answer the second part of that question, which is how can I avoid it? Nobody knows is the answer. But we have certainly evidence to say that there is an increase, and that could well be due to many of the environmental factors that we are dealing with or having to deal with today.
या यानी कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स अभी बढ़ रहा है, लेकिन उसका वजह क्या है वो ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते। गूगल करेंगे तो बहुत सारे रीजंस मिल सकते हैं, बहुत सारे डाइट के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जब बहुत सारे हाइपोथेसिस रहता है तो उसका मतलब यही है कि एक क्लियर कट आंसर नहीं है। लेकिन जो हमें पता है वो एक ये है कि शायद इन्फेक्शंस के वजह से हो सकता है, या तो हमारा फैमिली हेरिडिटी के वजह से हो सकता है, और तीसरा जो केमिकल्स और एनवायरमेंटल अदर इन्फ्लुएंसेस जो है होता है, यानी कि ये जैसे केमिकल्स जो है वो उसके वजह से भी हो सकता है। ओके, सो वन मोर साइड क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड इज डिफ्यूज goiter enlargement in Graves disease, will it go away or will it remain? Dr. Arun. Interesting question. Yes. The answer to that is both. So it can go away. It depends on how much of. So Graves' disease is the autoimmune hyperthyroidism, or autoimmune excess of thyroid hormone happening due to autoimmune cause. Now, when that happens, the gland most often enlarges, and it enlarges completely. So it's a diffused enlargement of the gland that happens. Now, if it is mild, many a times when we treat the Graves' disease, we have different forms of treatment. But when we treat it either medically or by iodine treatment, surgery, of course, it will go away anyway. So I'm not going to surgery. But by medical treatment, when you treat it, many a times it will go away if it is mild. Now, the larger ones, as well as there is also a type of Graves disease where there could be nodules, what we call as a nodular Graves. There, it may not completely go away. Now, that in itself might not be a big problem. You would deal with Graves disease separately, treat it and all that, but you would deal with the goiter also separately. So I think if there are nodules there, that nodules also, because there have been different points of view in the past saying that Graves disease you won't have malignancy and all that, but a lot of it has not been right. So if you have a nodule, you still have to follow that nodule, investigate that nodule, do tests for that nodules, as well as treat that nodule separately in many of these cases. So the answer to that is yes, it can go away in some, it may not go away in all. ओके, सो दैट मीन्स देखो, यानी कि जो जो थायराइड ग्रेव्स जो में स्वेलिंग होता है वो जा भी सकता है, नहीं जा भी सकता है, लेकिन उसमें अगर स्वेलिंग है वो डिफ्यूज है तो हम दवाई के वजह से दवाई का असर देख सकते हैं, लेकिन उसमें अगर गांठ हो यानी कि उसमें एक नोड्यूल जैसा हो तो उसका फॉलो अप करके वो क्या है, क्या हो सकता है, उसका साइज बढ़ रहा है, वो सब देखना पड़ेगा। ओके डॉक्टर रितेश, लेट मी मूव टू द surgical aspects. So you have already mentioned that everything doesn't require FNAC, everything is not malignant, but what are the indications where you actually go for a surgery in a goiter? थैंक यू जो सर, ये भी ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कोई भी हो उसको ऑपरेशन से डर लगता है। इवन मैं ही हूँ, मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरे को कोई ऑपरेशन कराना पड़े। सिंपल सी बात है, ये तो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। सो ऑपरेशन करने के लिए हमको वैलिड इंडिकेशन चाहिए होते हैं, वैलिड रीजन चाहिए होते हैं ऑपरेशन करने के लिए। अननेसेसरी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने अभी तक सब डिस्कस भी किया कि गोइटर्स में दो टाइप के होते हैं। एक तो डिफ्यूज गोइटर जो पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, उस केसेस में भी कभी कभी हमको ऑपरेशन करने पड़ते हैं, स्पेशली तब जबकि वो प्रेशर सिम्टम्स कॉज करते हैं। प्रेशर यानी कि आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स जो है हमको दबाते हैं और उनकी परेशानियां कॉज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है थायराइड के बगल में, वो होता है सांस की नली, क्योंकि सांस की नली के दोनों साइड थायराइड है। तो थायराइड की नली के ऊपर जब सांस की नली के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है थायराइड के ग्लैंड के साइज की वजह से, चाहे वो नोडुलर गोइटर हो चाहे वो डिफ्यूज गोइटर हो, अगर पेशेंट को सांस लेने में परेशानी हो रही है, सांस में रुकावट आ रही है, कभी रात में सो रहे हैं चोकिंग हो रही है, सीवियर सिम्टम्स है प्रेशर के, जिसकी वजह से उसका सांस की नली पूरी दब गई, जो कि हमको कई बार एक्सरे में क्लियर दिखती भी है, तो वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं कि ऑपरेशन करके उस रुकावट को हटाया जाए, क्योंकि जब तक वो ऑपरेशन नहीं करेंगे वो रुकावट नहीं हटेगी और पेशेंट की सांस की नली पूरी खुलेगी नहीं, जिसकी वजह से वो सांस ना प्रॉपर ले पाएंगे ना छोड़ पाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट रीजन कि जब सांस की परेशानी हो थायराइड की वजह से, दबाव की वजह से, तब ऑपरेशन करते हैं। नॉन कैंसर केसेस में जिसमें कैंसर नहीं है तब भी। दूसरा चीज है, जब थायराइड के ग्लैंड की इनलार्जमेंट या साइज के बढ़ने की वजह से या गोइटर की वजह से जब खाने की नली के ऊपर दबाव पड़े, हम लोग जब खाना निगलते हैं तो खाने की नली सांस की नली के पीछे होती है।
थायराइड ग्लैंड पीछे की साइड से जाके वहाँ पे दबाव डालता है, जिससे खाने में रुकावट आ सकती है। उस वजह से भी हमको ऑपरेशन करना मैंडेटरी होता है कि खाने की नली के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो हट जाए। एक और इम्पोर्टेंट रीज़न होता है, आपको बताऊँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है आवाज़ की नस, जिसको रिकरेंट लेंजियन नर्व बोलते हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं, हमें जितनी भी आवाज़ निकल रही है वो हमारे वॉइस बॉक्स से निकल रही है, पर वॉइस बॉक्स को कंट्रोल कौन करता है? एक नस, जिसको रिकरेंट लेंजियन नर्व बोलते हैं, जो थायराइड ग्लैंड के थ्रू पास होती है। तो जब थायराइड के इनलार्जमेंट या गोइटर की वजह से रिकरेंट लेंजियन नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ने लगे, आवाज़ की सिम्टम्स कॉज होने लगे, तो उसमें हमको सोचना पड़ता है कि या तो ये दबाव की वजह से हो रहा है और या फिर कैंसर की वजह से हो रहा है। उस केस में भी हम लोग ऑपरेशन की ओर ज़्यादा डेविएशन करते हैं कि हमें ऑपरेशन करना चाहिए। प्लस जब थायराइड ग्लैंड में कैंसर का शक है कि हाँ कैंसर, इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम लोग ऑपरेशन का जो है डिसीजन लेते हैं कि इसमें ऑपरेशन करते हैं। और फिर ऑपरेशन की टेक्निक्स अलग अलग होती हैं, वो हम बाद में डिस्कशन कर सकते हैं, बट वहाँ पे हमारा ऑपरेशन का डिसीजन ज़्यादा हो जाता है जब कैंसर का शक ज़्यादा होता है या कैंसर कंफर्म होता है। उस केसेस में हम ऑपरेशन करना प्रेफर करते हैं। सो दो चीज़ें, जब प्रेशर सिम्टम्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के इन्लार्जमेंट की वजह से या गोइटर की वजह से, और दूसरा जब कैंसर का शक होता है या कैंसर कंफर्म होता है, तब हम लोग ऑपरेशन करना प्रेफर करते हैं। So that means the indications, main indications for surgery in a goiter is, one is any suspicion that it may be cancerous or something that is dangerous, and second is uh, the swelling itself producing some symptoms like obstructive symptom, which was already mentioned. But I think one more thing I may add is that nowadays the cosmetic appearance has also been coming up as a major reason, isn't it? That I don't want even a mild swelling. I want everything to be clean, my neck to be clean, because it's a so visible area of the body. Yes. Yeah. Okay. So, Dr. Arun, so when we do surgery, already has been covered. What will we do if you are not going for surgery? अगर सर्जरी नहीं करता है तो ये सब जो इंडिकेशंस जो डॉक्टर रितेश अग्रवाल ने बोला वो सब इंडिकेशंस नहीं है पेशेंट में, और हम लोग बोलते हैं कि नहीं इस सर्जरी की जरूरत नहीं है, सूजन है, गांठ है, लेकिन सर्जरी की जरूरत नहीं है। तो वो पेशेंट्स को कैसे फॉलो अप करते हैं? व्हाट विल यू डू ऑन फॉलो अप, और हाउ डू यू फॉलो अप, और व्हाट विल यू टेल योर पेशेंट्स दैट यू डोंट नीड सर्जरी बट फर्दर व्हाट इज टू बी डन? Okay, once we have decided for the right reasons that surgery is not required, then the question is this a diffused goiter, or is it a nodular kind of goiter? Because if it's a diffuse goiter, which means the whole gland is enlarged, but it is not causing any symptoms, not causing any problems. Many a times the follow-up is all about, because these people can still develop hormone deficiency. Okay, they can either develop underactive hormone or overactive hormone, can happen. So they need follow-up mostly in terms of blood tests, serial blood tests. It might be every 6 months or a year. That might be required. Whereas if it's a nodular goiter, and if you have some nodules which are suspicious, and but they are not suspicious enough to do surgery, that sort of thing, then you certainly need follow with a scan as well as a blood test. So this is a decision that needs to be taken along with the doctor needs to take it along with the patient, and there has to be discussion, because patient needs to understand. Otherwise what happens is they will think, yeah, you said everything is okay. We have seen such patients, isn't it, where doctor would have said, yeah, it's okay, you go away, and they go away, and years later they come back with a problem, either in terms of hormone deficiency or in terms of a nodule that has grown at a later stage. So some sort of follow-up will be required. It might be a combination. It might be either a blood test or a scan or both. Now, not everybody needs everything. So I think that decision has to be taken by a specialist, and which is why it is so important that you meet the right people so that you get the right message. You need to understand about the disease. This is not going to, it's not going to miraculously disappear. I think many of these goiters will not miraculously disappear. But just because it is there, unless, as Joe was saying, there is a cosmetic reason for you to get to be worried about, most often it is not a problem at all. It might remain there. There's so many people around us. There's so many people around us who have mild swellings of thyroid, who don't get any problem, absolutely no problems throughout their life, go on their life without any problems. But you need to make sure that you belong to that group where things are fine, and or if there are things to be followed up, that is followed up, because it's very easy, it's very simple and very easy to follow up, as Udeshji was telling from the beginning. It's very, very easy. One simple blood test and one ultrasound scan, both
not see, a scan, especially not an invasive scan, not a intrusive scan. It's so very easy to do this, and it's just a question. And also, I should also warn at this point that unnecessary frequent testing is also not required. You do now sometimes see people going for scans every 3 months, and then the reports, they will go to different centers, and the report might be slightly different. The way the radiologist reported might be slightly, and then they get very anxious, and then they go to the third place, then go to the fourth place, and finally they end up with in the wrong hands sometimes. So I think you should not get overtly concerned and start to panic also. Overdoing is also sometimes a big problem in our system, and which is why I specifically mentioned that. But we can easily follow these patients up. There might be a group of patients where we would say, forget it, everything is okay, you only need a yearly test or a blood test, but otherwise you're okay. There are other tests also, like on antibodies and all we do. I will not go into all those details. But if you have, yes, the follow-up is very simple, and we can do that very easily anywhere across the country, without much one, the expense, it's not very expensive to follow, and it can be very easy to find a specialist in most parts of the country as well. ओके या सो तो अगर सर्जरी नहीं कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो सही डॉक्टर जो है वो बताएंगे आपको कि वो जो गांठ है वो कैसा है, उसमें कुछ फॉलोअप करना है कि नहीं करना है। अगर करना भी है तो उसमें कितने महीने में वापस स्कैन करना है, अगर वापस एफएनएसी करना है तो वो कितने महीने में करना है, क्योंकि वो उसके हिसाब से, जैसे डॉक्टर रितेश ने पहले बताया, वो थायराइड ग्रेड जो है वो अल्ट्रा स्कैनिंग के ऊपर जो रिस्क बताते हैं, और एफएनएसी में बेथेस्डा स्टेजिंग जो है वो भी उसका रिस्क बताता है। तो वो रिस्क के हिसाब से जो फॉलोअप स्कैनिंग और फॉलोअप जो है वो 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल भर में एक बार, या वो हो सकता है। तो आपका डॉक्टर वो आपका रिपोर्ट्स देके सही बताएंगे कि आपको कितने महीने में फॉलोअप करना है और ब्लड टेस्टिंग या स्कैनिंग वगैरह करना है। ओके, सो now Dr. Ritesh, one thing, once we go ahead with the surgery, what is the further follow up? अगर सर्जरी के बाद, सर्जरी कर दिया आपने, जो बताया सर्जरी कैंसर का शक हो गया या तो कोई सिम्टम्स है जो सर्जरी से वो निकाल सकते हैं, वो सही हो सकता है, और आपने सर्जरी किया, तो उसके बाद क्या करेंगे आप पेशेंट्स का फॉलो अप? थोड़ा सा मैं ऑपरेशन के टाइप से बता देता हूँ कि हम लोग ऑपरेशन कैसे कैसे करते हैं। देखो, थायराइड में ऑपरेशन 2 टाइप के होते हैं। अक्सर पब्लिक जो है या जो भी पेशेंट होते हैं मुझसे पूछे, डॉक्टर आप जो है मुझे नोड्यूल है, खाली नोड्यूल निकाल दो। तो ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है कि मिनिमम ऑपरेशन जो थायराइड में होता है उसमें थायराइड का एक साइड का ग्लैंड निकालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हेमीथायरॉयडेक्टमी। तो हेमीथायरॉयडेक्टमी करने का हमारा इंटेंशन ये होता है कि अगर कैंसर नहीं है, हम बाकी वाला ग्लैंड बचा लें, ताकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, अगर हम थायराइड पूरा निकाल देंगे, हार्मोन्स तो हमारे शरीर में बनेंगे नहीं थायराइड के T3 और T4, तो उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इंटेंशन ये रखते हैं कि हेमीथायरॉयडेक्टमी की जाए, कि आधा ग्लैंड बच जाए और हमें थायराइड हार्मोन्स की ये गोली ना देनी पड़े पेशेंट को। तो वन इज हेमीथायरॉयडेक्टमी, सेकंड इज टोटल थायरॉयडेक्टमी। टोटल थायरॉयडेक्टमी का मतलब होता है कि थायरॉयड पूरा पूरा निकालना पड़ता है। कई सारे रीजन है, जैसे कैंसर है या डिफ्यूज इनलार्जमेंट है या मल्टीपल नोड्यूल्स है दोनों साइड में, तो हमको पूरा ग्लैंड निकालना पड़ता है। उस केस में थायराइड ग्लैंड जब पूरा निकल गया तो थायराइड का जो है हार्मोन्स बनाने की जो है कोई जगह बॉडी में बची तो है नहीं, तो हमको उस केस में गोली देनी पड़ती है थायराइड हार्मोन्स की, जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं। ये गोली बहुत अच्छी गोली होती है, सादी गोली होती है, यूजुअली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सुबह लेनी पड़ती है। इसके लिए हम अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेजते थे, जो ये डिसाइड करते हैं कि उस पेशेंट के लिए कितनी पावर चाहिए उसकी बीमारी के हिसाब से। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि हर पेशेंट के लिए सेम डोज उस एज पे और उस वेट पे नहीं लगती है। बीमारी और ये बाकी सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि पावर कितनी देनी है गोली की। ये डिसीजन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रॉपर फॉलोअप रखना पड़ता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आफ्टर द ऑपरेशन। ऑपरेशन जब करते हैं, चलो हमने बेहोश करके पूरा ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन की 1 या 2 दिन के बाद छुट्टी कर दी, पट्टी खुल गई 5 दिन के बाद, और उसके बाद जो फॉलोअप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉलोअप में हमको हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट देखनी पड़ती है कि जो हमने ट्यूमर निकाला वो क्या था, कैंसर था या नॉन कैंसर था। अगर कैंसर था तो कौन से टाइप का था, क्या ग्रेडिंग थी, क्या स्टेजिंग थी। और ऑपरेशन के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कैल्शियम। कैल्शियम की दवाई देना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड से ही चिपके बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड।
हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो पैराथायरॉइड जब भी टच होते हैं तो कुछ समय के लिए वो काम करना बंद कर देते हैं, तो टेम्परेरी कैल्शियम की दवाएं देनी पड़ती हैं। जब पैराथायरॉइड नॉर्मल काम करने लगते हैं, कैल्शियम की गोलियां हमको धीमे धीमे बंद करनी पड़ती हैं। तो ये दो चीज़ें, कैल्शियम की दवाइयाँ और थायराइड की दवा, थायरॉक्सिन की दवाई, ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि कब किसको कितनी कितनी देनी है। एक तो ये पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कि अगर हमने ऑपरेशन किया और कैंसर निकला तो हमको कैंसर का आगे कौन सा ट्रीटमेंट करना है, तो ये डिपेंड करता है थायराइड के कैंसर के टाइप के ऊपर कि कौन सा कैंसर है। अगर डिफरेंशिएटेड कैंसर जैसे कि पेपलरी या फॉलिकुलर कैंसर है तो एक पीने की दवा देनी पड़ती है 1 महीने के बाद, जिसको आयोडीन की दवा बोलते हैं। ये स्पेशल मेडिसिन होती है, रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है और कुछ ही जगह पे इसकी अवेलेबिलिटी होती है। तो हर चीज़ डिपेंड करती है कि हमने ऑपरेशन कौन सा किया, ऑपरेशन के बाद रिपोर्ट्स में क्या आया, उसके हिसाब से ही आगे का फॉलो डिसाइड होता है। Okay, so I think we have already reached to the limits of today's program because it's already 51 minutes, and so I'll just end the session with the last question to Dr. Arun. Dear doctor, I am having a 12-year-old daughter with mild swelling. Will it require surgery or medicine? I think we have to keep the answer very simple, isn't it? A 12-year-old, almost always this is a physiological goiter. But we will not just neglect it like that. We would obviously need to examine. So what is physiological goiter? I think I mentioned in the beginning. Many of the times, the start of puberty, because of the hormonal changes that happens in females, especially at that age, with the estrogen, the estrogen actually can increase the size of the thyroid gland. So there will be so they will not at that age suddenly the estrogen surge comes in the body, and when that happens, the thyroid gland will slightly enlarge at that time. Most often, it will settle down by itself. Okay? However, I think it is always prudent for you to actually show it to a doctor and make sure that it is a physiological goiter, because you don't want to miss a rare possibility of a nodule coming there or any other eventuality there. But most often, if a 12-year-old develops it, this would, so 9 out of 10 I would say would be this, because cancer or a nodule at that age is not common. We have all seen it, but it is not common. So, but I would always err on the side of caution, always play it safe, again, because the tests are so easy, and also, I mean, I should not forget also that autoimmune thyroid disease can start at that age. So if there is a small goiter, it's best to do a TSH at that time. Make sure that the function is okay, the function of the gland is okay. So that we rule out a autoimmune thyroid disease. So if you rule out autoimmune thyroid disease, most often it is going to be a physiological goiter, and most often you just don't need to do anything at all. You just need reassurance, and reassurance, and as they grow, this will settle down, and it will not be a problem at all. Thank you, Dr. Arun, and I would like to thank both Dr. Arun S. Menon and Dr. Ritesh Agarwal for being part of this program and making it an excellent discussion. And three of us, including myself, would like to thank the organizers of ITS for giving us this opportunity and platform to help spread the information, the correct information about thyroid. So I think we have done with the program now. Thank you, Joe, for wonderfully moderating the session. And thank you, Ritesh ji, for doing such a wonderful job in terms of explaining everything in such a layman's language, I should say. So thank you all so much. So I'll hand over the session to Dr. Mohan Chennai to conclude the program. Yeah, thank you very much. I think I enjoyed the program very much. I should thank the organizers for also helping. So the team did a very good job. I think I should mention the role of the moderator, Dr. Jojo sir, for excellently navigating through. I think taking the hands-on and advocacy for patients also given in crisp Hindi and very lovely way of explaining things. And I should thank Dr. Ritesh Agarwal sir for having painfully describing. He has got a lot of experience in managing difficult thyroid. I have seen one of these patients' reports and whatever he has sent in WhatsApp. The photos of the monstrous goiter, itna jada big goiters, retrosternal goiters. He has operated so many like that. But credit goes to everybody in the team also, anesthetist also. Everybody works with them. And Dr. Arun Menon sir for a very good, very calm and I think he has given a word for us today: cautious optimism.
So whenever we have a goiter, we should be cautious and we should be optimistic also. उसका मैं हिंदी भी जान किया हूँ, उसके बोलते सतर्क आशावादी. So उसका सतर्क भी होना पड़ेगा और आशावादी, very optimistic all of it. So I think we should all have the team in with us. I think it's a very good program and I appreciate the efforts played by all of you. Digital team also did a great job. So I think we'll go on with these programs for the next couple of many months as far as the ITS team very much allows us. And we'll have new topics for you. If you have any queries which are still pending, you can always write into us. Our email is endocrineawareness@gmail.com. And ITS has got lot of initiatives for patient awareness. Our secretary itself, Dr. Arun Menon sir, is with us. So, sir, I request you to please carry on these programs so that we'll help the public to reach out to the right specialist and at the right time also. So, Certainly. I take your leave, take your permission. Thank you. Jai Hind. Namaste. Bye.